And shifting our focus to another big debate of the day. RSS General Secretary Dattatreya Hosabale has waded into the population debate. Making a pitch for the uniform national policy on population control, Mr. Hosabale said that religious conversion and migration are causing what he says is a population imbalance, quote-unquote. RSS General Secretary also called for a strict implementation of anti-conversion laws. Remember, this comes after RSS Chief Mohan Bhagwat, during the Vijay Dashmi celebrations, had said that religion-based population imbalance is an important subject that cannot be ignored. He had further said that population imbalances can lead to changes in geographical boundaries, raising issues of national security. Now, does India need an anti-conversion law, or all of this is just fear-mongering? Is there a rational basis to what is being said by the RSS and its leader? I'll take this question to my guests, but first let's talk about some numbers which also exist. And this is about the population growth which we have witnessed in this country and how that really pans out to be. If you look at the fertility rate across communities, whether it's Hindus, Muslims, within Muslims, the fertility rate compared to their own rate has drastically come down, but it continues to remain one of the highest compared to all of the communities in the country. The census data would tell us, and those are the figures on your screens right now, that Hindus 2001-2011 24.6% and 16.8%, and Muslim about 24.6%. So the rate of growth year on year, or whenever the census really happens, within the Muslim community has come down, but compared to other communities, it's still very high. Now, this is about the organic growth of population that happens within a nation. There are other factors that organizations like RSS are talking about, which is the problem of Rohingyas, which is the problem of illegal immigrants entering the country, and especially in border areas in states like Assam and West Bengal, where we have told you through ground reportage that there has been an attempt to change the demography of these places. And these are people who are coming from across the border. These are not people we are talking from, who are locally, who are our citizens. Now, the decline in Hindu population growth was about 3.1%. This is roughly 3.1% points from 19.9 to 16.8. While the Muslim population growth dropped by 4.7% from 29.3 to 24.6, as I said earlier. Also, the fertility rate, as I said, is an average of the number of children who are born to a woman in their lifetime, and the fertility rate among Muslims has dropped nearly half since 1993, but it's still the highest. The fertility rate amongst Muslims has dropped to about 2.3 during 2019 to 2021. In 1992-1993, Muslims had a fertility rate of 4.4. Amongst Hindus, the fertility rate has also dropped from 3.3 to 1.94, a much sharper fall. This is a Health Ministry survey that tells us. In the previous survey, for 2015-16, fertility rate amongst Hindus was roughly about 2.1. Now, the key question is that with this drop in the fertility rate, there might be certain problems which are addressed. But what does one do to the issues of illegal immigration, changes of demography which are happening at the borders? And is there really some merit to this entire argument of conversion? The entire argument, what exactly has happened? We have also had reactions come through the day. Let's listen into those reactions as well. हमारे देश में कन्वर्शन होने से, मतांतरण होने से कई जगह पर संख्या हिंदुओं की कम होती है। उसके परिणाम भी भुगतना पड़ता है। बांग्लादेश से, बांग्लादेश से उत्तर बिहार के राज्यों में आप पूर्णिया, कटिहार वगैरह देखेंगे, या नॉर्थ ईस्ट में देखेंगे, यही इसी के लिए आंदोलन भी हुआ था वहाँ। अब थोड़ा सा उसको रोकने का प्रयास वहाँ तो हुआ, लेकिन अन्य राज्यों में भी वो धीरे धीरे बढ़ने के सभी प्रकार के अनुभव आए हैं। जब गुजरात में किश्ती डूबने लगती है, पार्लियामेंट का चुनाव दस्तक देने लगता है, तो मजहब के नाम पे, धर्म के नाम पर आप कोई ऐसा शिगुफा छोड़ना चाहते हैं जिससे ध्रुवीकरण हो सके। तो कुल मिलाकर हताश भाजपा, जो आर्थिक मोर्चे पर बुरी तरह पिट गई, बर्बाद और तबाह कर दिया जिसकी आर्थिक नीतियों ने देश, अब ऐसे ही समुद्र मंथन से हीरे निकाले जाएंगे और उन्हीं मुद्दों पर चुनाव लड़ने की बात होगी। Well, the RSS pitch and the population imbalance which is being talked about, is there some fact, is there some logical basis to it, or this is plain fear-mongering, as many critics argue for?
We have with us Mr. Ratan Sharda, who's an RSS researcher and author. We're also expecting Maulana Ali Qadri, the Islamic scholar, to join us in just a few minutes from now. Mr. Sharda, I want your opening comments on this, and I'd be the devil's advocate here. What is the rational basis that we have for anyone, for any organization to say that the changes in demography will affect the national borders of this country? Substantiate that, sir. Well, first of all, just to give a short comment on the Congress person who spoke, we know that family planning was abandoned in 1976 because of the horrible way the family planning was implemented. Till that time, Hamare was going very well. So wrong way of implementation has created a fear where now nobody wants to speak about family planning. That is point one. Point two was raised by RSS is not something new. It has been talking about demographic imbalance, talking about infiltration since 1970s. I have studied their resolutions, and they clearly, I can know that from 1970 onwards, there has been continuous caution about demographic changes. Now, if you talk of Jyoti Basu way back in 1992, in his own CPM news magazine called Ganashakti, he said, yes, there is a huge illegal immigration in Bengal, and he have been adopting them. When Buddhadev Bhattacharya said the same thing, he lost the election. So there is a huge vote bank issue. Coming to the secular issue, what else did RSS person said? One is Mr. Dattatreya Hosabale. Misuse of water should be stopped. We know that 4% of water resources for 16% of world population in 2.1% land of the world. That is what the situation is. So that's a genuine point. He talks about risk of aging population. If we go China way, today we are a young nation. After 15 years, maybe we become a old nation. So naturally, that's not a valid reason. Conversion. One example, in Andhra Pradesh, population of Christians officially stands at 2.5% despite huge conversions. But Jagan Congress MP at that time, Mr. Raj, clearly said that the population of Christians in Andhra Pradesh is nearing 25%. For that, he was beaten up. He was removed from the party. So the conversion issue is also not a bogey. Coming to the infiltration of the Bangladeshis, if you look at the number of the growth rate in 1951 to 61, the overall Indian growth rate was 21.6%. In Bengal, it was 32.8%, which clearly showed, as per the scholars, I have got entire thesis of the scholars, that this large numbers comes from the infiltration. In fact, in Bangladesh, population rate dropped because people are migrating to India. That's another example. We have Bihar, where the population has grown out of proportion to normal Muslim growth rate. Same is true. Mr. Sharda, you've given reasons, but now, I'm going back to the statement. I'm going back to the statement that Mr. Bhagwat had made at the program when the celebrations of Vijayadashmi were on, and he had said that one cannot ignore the growth of religion-based population in this country, and he had also said that there are fears of this affecting our national borders as well. So, two issues here. You pointed out certain issues, I want to point out certain issues. Two issues here. That religion-based population growth is somewhere affecting the national security. That's the argument he is making, and that's the argument I want you to respond to. How? I have India Today magazine's report in my book, where they state that number of madrasas, number of mosques have gone up across the border of Nepal, India, and Bangladesh. It is my article. It's an India Today article of that time, not today. I just was talking about what happens when the religious imbalance happens. Very unfortunate, but I must remind people that Pakistan and Bangladesh are born only because of religious imbalance. Problem in Kashmir happened because of religious imbalance. Then even the minor 4-5% Kashmiri. Sir, can I delve on one more point before I bring in the other guests? What is religious imbalance? Can you define that? Yes, exactly. That's what I said. When you have concentration of population in certain pockets, you have the problem of intolerance where the local population cannot. Is it about one particular community? I talked about Andhra, it was Christians. Yes. Northeast, it was Christian church which tried to foment trouble in Northeast. So there are different forces. I am talking of all the forces. It may look very unpopular, it may look bad, but then one has to accept the truth because I have entire. No, that's the reason I'm asking you these straight questions. Maulana Ali Qadri. Northeast, wherever the population imbalance happened, they become separatists, they become militant, they were backed by the church there, where the church had 136 So years. it is safe to presume that when you say population imbalance, you mean to say that when inorganically people are being converted from one faith to another and they are lured
either for jobs, for security, or for something or the other. Maulana Ali Qadri, I'm coming to you. There's a statement which has come in from the RSS, Mr. Hosabale, and earlier Mr. Mohan Bhagwat had also spoken about it. There's an argument that Mr. Ratan Sharda is making, that you look at Northeast, you look at Kashmir, you look at Andhra, you look at parts of West Bengal, Assam, whenever there is evidence to show that people have been converted from one faith to another inorganically, it has led to internal security and national security issues. Respond to that, sir. देखिए मैडम, रतन शारदा जी को ये बखूबी समझना चाहिए कि ये देश में सबसे पहली बात तो ये है कि धर्म की आजादी है जी, और हर इंसान को अपने धर्म के प्रचार की इजाजत है। अब अगर कोई अपनी मर्जी से कन्वर्ट होता है, हिंदू अगर मुसलमान होता है, या मुसलमान हिंदू होता है, या क्रिश्चियन होता है, या वो कन्वर्टेड हिंदू होता है, वॉट एवर इट में भी, जो भी हो, यहाँ पर अभिव्यक्ति की आजादी है। लेकिन ये जो रतन शारदा जी कह रहे हैं कि इसको नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा है, तो किसी भी इंडियन से एज ए इंडियन, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी इंडियन से किसी को नेशनल सिक्योरिटी का कोई ना यहाँ पर थ्रेट था, ना है, ना कभी रहेगा। ये बड़ी ही क्लियर बात है। रहा सवाल अदर कंट्रीज से जो घुसपैठिए हैं, वो जो हमारे देश में आ रहे हैं, उनको रोक लगाने के लिए हमने भी तायद की। जब नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि घुसपैठियों पर रोक लगना चाहिए, तो बिल्कुल लगना चाहिए। दूसरी बात मैडम, जहां तक के पॉपुलेशन कंट्रोल की बात है, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आप इसको सही वे में रखें कि हमारी जमीन में कितना पानी है, हमारे पास जमीन रहने के लिए कितनी है, और हमारे पास खाने के लिए अनाज कितना है, वेजिटेबल्स कितने हैं। अगर आप इस हिसाब से एक्सप्लेन करेंगे सारे इंडियंस को एक ही लाइन में, एक ही लेवल में, तो बराबर ये लोग कॉपरेट करेंगे, चाहे वो किसी भी धर्म से हो। आप एक धर्म विशेष को टारगेट करेंगे, मुसलमानों की पॉपुलेशन बढ़ रही है, मगर यहाँ पर मुझे नहीं लगता मौलाना साहब की जब से हमने बात करना शुरू किया है किसी धर्म विशेष की बात की गई है, बल्कि मैंने रतन जी से सीधा सीधा सवाल भी पूछा था कि क्या हम किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी की बात कर रहे हैं। उन्होंने भी साफ साफ कहा कि अलग अलग हिस्सों की अलग अलग किस्म की राजनीति है और उसके बारे में बात की जा रही है। हाँ, कन्वर्जन की जरूर बात की जा रही है। मौलाना साहब, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूं, और ये सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों में भी कहा गया है कि धर्म की अभिव्यक्ति की आपके पास आजादी है, अपने धर्म की प्रचार और प्रसार की आपकी आजादी है, मगर किसी को अपने धर्म में कन्वर्ट करना वो आजादी या फंडामेंटल राइट नहीं माना जा सकता। बहुत बड़े बड़े नेता हुए हैं इस देश में जिन्होंने कहा है, जिन्हें स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा भी लिया, कि इस देश को एक एंटी कन्वर्जन लॉ की जरूरत है। इस तरह से कन्वर्जन होना देश के हित में नहीं है। देखिए मैडम, मैं जो है किसी को जबरदस्ती कन्वर्ट करने की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जहां तक के सवाल हमारे संविधान, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने जो इंसान को आजादी दी है, मैं यहाँ पर किसी एक धर्म विशेष की भी बात नहीं कर रहा हूं। बहुत सारे ऐसे आपको दिखा होगा, आजकल आपके चैनल्स पे भी आ रहे हैं, एक्स मुस्लिम, तो वो भी तो कन्वर्ट हुए ना मैडम। जैसे साहिल, अगर ऐसे बहुत सारे आपको दिखेंगे लड़के जो एक्स मुस्लिम के नाम से आ रहे हैं। तो ये हमारे देश का संविधान हमें इजाजत दिया। अगर कोई हिंदू क्रिश्चियन बन रहा है, कन्वर्टेड क्रिश्चियन है, वो जो है दलित था और वो क्रिश्चियन हो गया, तो उसको उसके संविधान ने इजाजत दी। अगर आप लोग इस पर रोक लगाना चाहते हैं, तो ये मुझे बतलाइए, क्या ये हमारे संविधान में दखल नहीं होगा? क्या ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो है? रतन शारदा जी, शायद हिंदुस्तान ही एक ऐसा देश है जहां पे देश की जो बहुसंख्यक समाज है, मेजॉरिटी है, वो एक एंटी कन्वर्जन लॉ की बात करती है। लेकिन ये भी बोला जाता है कि आर्टिकल 25 है, आर्टिकल 26 है, 14 है, 21 है, हिंदुस्तान के संविधान में आजादी है। आप कैसे एंटी कन्वर्जन लॉ बना सकते हैं? और अगर बना सकते हैं तो मेरा सवाल ये है कि क्या एक यूनियन लेवल पे, क्या केंद्र सरकार को कोई इस तरीके का कानून लाना चाहिए? देखिए अनुषा जी, कन्वर्जन की डिबेट तो हो नहीं रही है। कन्वर्जन की जहां तक बात है, आपका यू हैव अ राइट टू प्रोपेगेट योर रिलीजन, यू डोंट हैव अ राइट टू कन्वर्ट बाय फ्रॉड, बाय एनी काइंड ऑफ एल्योरमेंट। झगड़ा उसका है, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट हो, चाहे आंध्र हो, चाहे इस समय तमिलनाडु, जहां भी है, वो एल्योरमेंट का इशू है। और नॉर्मल अगर कोई कन्वर्जन होता है तो अलग बात है, लेकिन क्लियर कट एल्योरमेंट द्वारा होता है, इसमें कोई शक नहीं है। दूसरी बात है कि इन्फिल्ट्रेशन की बात हमने की। मैंने आपको इंडिया टुडे का एग्जांपल दिया, मैंने कम्युनिस्ट पार्टी का एग्जांपल दिया, मैंने आपको हर पार्टी का एग्जांपल दिया। आसाम का सारा जो झगड़ा वहीं से शुरू हुआ था वो चल रहा है। जहां तक एक्स मुस्लिम का सवाल है, एक्स मुस्लिम किसी और धर्म में नहीं जा रहे, वो एग्नोस्टिक हो गए। उनको इस्लाम से परेशानी, उनको किसी और धर्म में जाने की इच्छा नहीं है। और सबसे पहले कन्वर्जन कौन लाया था? नियोगी कमीशन, मध्य प्रदेश की कांग्रेस गवर्नमेंट और
शुक्ला जी, उन्होंने रविशंकर शुक्ला, उन्होंने एंटी कन्वर्जन बिल लाया था 1956 के आसपास। लेकिन रतन जी, अगर ये बोला जा रहा है, अगर बोला जा रहा है कि कन्वर्जन से कहीं ना कहीं पॉपुलेशन इम्बैलेंस हो रहा है, तो उस समस्या को एड्रेस करने का भी तो कोई तरीका होना चाहिए। अनुषा जी देखिए, इन्फिल्ट्रेशन का सवाल है। इन्फिल्ट्रेशन अब जब से आसाम के अंदर गवर्नमेंट आई है, बीजेपी की इन्फिल्ट्रेशन कम हुआ है, ये प्रूवन है। मैं वहां जाके देख चुका हूं, लोग बता चुके हैं। बंगाल में उनका स्वागत होता है, वहां तो ममता जी कहते हैं उनको सिटीजनशिप दे दो, मैं मजिस्ट्रेट को पावर देना चाहती हूँ। समस्या यहाँ पर है। मैंने आपको बॉर्डर इस डिस्ट्रिक्ट का बताना चाहता, बिहार के अंदर 4 डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर टोटल पॉपुलेशन, मैंने आपको फिगर दे, जो नॉर्मल ग्रोथ से अधिक है, वहाँ इन्फिल्ट्रेशन है। आंध्र में क्लियर कन्वर्जन का इशू है, लेकिन बंगाल के अंदर, बिहार के अंदर, आसाम के अंदर क्लियर कट more than average growth of population, whether Muslim or Hindu, is happening because of the infiltration. उनको आप कैसे बसाएंगे, उनका क्या करेंगे आप, ये सीरियस प्रश्न है, इसलिए उस प्रश्न का उत्तर चाहिए। और कन्वर्जन द्वारा जो आपको तो खाली आप बात कर रहे हैं, केरल के अंदर क्रिश्चियन लोग लड़ रहे हैं, 3000 क्रिश्चियन लड़कियां वहां पर लव जिहाद में गायब हो गई, मुस्लिम बन गई, नजर नहीं आ रही वो। ये क्रिश्चियन कह रहे हैं, उनके यूट्यूब के इंटरव्यू खुद मैंने भी लिए हैं। तो ये संघर्ष का वातावरण बनाना कन्वर्जन के बहाने, ये गलत है किसी भी धर्म के लिए। हिंदू धर्म में कन्वर्जन की है ही नहीं, कोई स्कोप ही नहीं है। इसके कारण हिंदू धर्म के ऊपर अधिक अटैक होते हैं, इसके कारण हिंदू धर्म से पोचिंग अधिक होती है। समस्या यहाँ पर है। मौलाना कादरी, मेरे पास समय कम है, मैं आपका उत्तर चाहूंगी इन सारी बिंदुओं पर। मौलाना साहब बोलिए। देखिए मैडम, हमारे रतन शारदा जी कह रहे हैं ये बिल्कुल ही वन वे और एक की तरफा बात कर रहे हैं, जिससे मैं बिल्कुल ही सहमत नहीं हूं। जहां तक के केरला की मिसाल दिए हैं, कई ऐसे केसेस हैं जो टोटली फेक केसेस है। अगर आप ग्राउंड रियलिटी पर जाएंगे तो इसका आपको अंदाजा होगा। हम यही चाहते हैं कि अगर आप हर समुदाय का ख्याल रखेंगे तो कीजिए, आप बिल्कुल लाइए, एंटी कन्वर्जन लॉ लाइए और इंटरकास्ट मैरिज पर भी लाइए, हम उसकी भी सपोर्ट करेंगे ताकि सारा फसादी खत्म हो जाए। लेकिन आप सबकी इंटरकास्ट मैरिज इलीगल थोड़ी है इस देश में। इंटरकास्ट मैरिज तो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ, इंटरकास्ट मैरिज भी अलाउ है, धर्म परिवर्तन भी अलाउ है यहाँ पर। तो अगर आप पाबंदी लगाना चाह रहे हैं तो सब पर लगा दीजिए ना। लव जिहाद भी बंद हो जाएगा और ये जो एंटी कन्वर्जन का जो आप लॉ लाना चाह रहे हैं वो भी लाइए, ताकि सब लोग मिलकर रहे। मौलाना साहब, एक हकीकत है, वो ये है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान हमारे नेबर्स हैं, खासकर पाकिस्तान से। और बांग्लादेश में भी कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जहां से रोहिंग्याज आ रहे हैं, या कुछ ऐसे एलिमेंट्स आ रहे हैं जो बहुत सारी दिक्कतों की वजह से हमारी इंटरनल सिक्योरिटी को इफेक्ट करते हैं। वो एक धर्म विशेष से आते हैं। उस पूरी समस्या को हम इग्नोर नहीं कर सकते, उसको कहीं ना कहीं तो डील करना पड़ेगा हमें। नेशनल सिक्योरिटी हमारे लिए सबसे पहले है, बाद में सब है। हमारे देश हित में जो बेहतर होगा हम करेंगे। लेकिन एक छोटा सा सवाल ये है कि जो सीए का जो हमारा कानून है, जिसमें हम हिंदू सिख सबको जो है अदर कंट्रीज से आने की इजाजत दे रहे हैं, तो क्या मुझे बताइए, क्या पाकिस्तान से जो सिख आएंगे जो खालिस्तानी ज़हनियत रखते हैं, क्या वो हमारे लिए नेशनल सिक्योरिटी के लिए? देखिए, सीएए पे तो एक बहुत बड़ा सवाल है और आई थिंक वो पूरी डिबेट ही अलग है। मगर मौलाना अली कादरी एंड रतन शारदा, आई थैंक यू बोथ फॉर जॉइनिंग अस दिस इवनिंग. Thank you so much for being a part of this discussion. When it comes to regulation of population in this country, it's a tricky legal issue. You cannot have a one-child policy like China because this is a democratic country, and of course there are religious, social sentiments which are involved in this entire debate. We'll continue talking about this much more on the other side of a quick break. Stay tuned.